Belwal, your English educator from APS Lamachor. So dear kids, how are you all? I hope you all must be fit, fine and fantastic and must be paying attention towards your studies. So once again, I welcome you all to your English grammar class. So dear kids, as you all know that nowadays we all are doing chapter 7, the exactives. So what are exactives? Exactives are the words which describes any noun or pronoun. So whenever any word which is describing any noun or pronoun, that is known as your exactives, or we can also say that all describing words are known as exactives. Okay, for example, if I say that a lazy boy was sleeping under a tree. A lazy boy was sleeping under a tree. So in this we are describing a boy. इस वाले में हम क्या कर रहे हैं? We are telling more about the boy. Boy तो है, but what he is doing? He is, what type of boy he is? He is a lazy boy. So we are saying that a lazy boy was sleeping under a tree. Okay, so boy is lazy. Suppose if I say that the black dog bark at strangers. The black dog bark at the strangers. So what type of dog it is? It is black in color. So here the black will be your exactive. If I say, dear kids, Neeta is having many dresses. नीता के पास बहुत सारी beautiful dresses हैं. So here many and beautiful, they both are exactive for the Nina's dress. If I say elephant is a big animal, so here big is your exactive because it is telling more about the elephant. So in this, all the words which I have said just now, that lazy, black, many, beautiful, large or big, they all are your exactive because it is telling more or it is describing more about the noun or pronoun. Children, as you know that we have already discussed our 5 different kinds of exactive. First one is your exactive of quality. Second one, exactive of quantity. Third one is your exactive of number. Fourth one is your demonstrative exactive. And the fifth one is your interrogative exactive. So I hope so you all must have seen my previous video and must have understood these different kinds of exactives. Okay, so moving forward in this series only, so today we will start with our 6th exactive, that is your possessive exactives. So what are possessive exactives? Exactives which are used before nouns to show possession are called possessive exactive. So my dear students, the exactive which we use before noun, जो हम noun से पहले use करें, so the exactive which are used before noun to show the possession of any person, that is known as your possessive exactive. For example, if I say, dear kids, that is my cat. If I say that is my cat, वो मेरी बिल्ली है, that is my cat. So here you can see I have written that before noun it is written. So here in this sentence you can see this cat. It is a noun. Cat क्या है आपका noun है because it is a name of an animal. ठीक है? और noun से ठीक पहले आप you can see one word is there, mine. So here this my word, it is showing that this cat belongs to me. ये पोजीशन शो कर रहा है. देखो cat तो है, it is cat, it's okay, but I am saying that is my cat. वो मेरी cat है. ठीक है? So here this my will be your possessive exactive because it is showing the possession. Okay? Now second one is your they have their toys. They have
their toys, ये उनके toys है. So we are here also you can see that toy is a noun. Toy क्या है? Noun है. And before noun we are just writing one word, that is their, उनके. So here this their is your possessive exactive. Okay, so this is your possession because it is showing the possession. ये क्या show कर रहा है? Possession show कर रहा है. तो यहाँ पे their क्या होगा आपका? Possession show कर रहा है कि ये उनके toys है. ठीक है? If I say my dear student that these girls are going to the book fair with their teachers. ये जो गर्ल्स हैं दे आर गोइंग टू द फेयर, वो मेले में जा रही है विद देयर टीचर, उनके टीचर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. सो हेयर ऑल्सो देयर इज शोइंग द possessive exactive. So my dear students, now a big confusion which everyone used to have, that what is the difference between the possessive exactive and what is the difference between the possessive pronoun. So there is lots of difference between them. So let's have a look. Now let's understand what is the difference between two. So what are possessive exactive? Possessive exactives are the words which are used before noun. That are used before noun. जो noun से पहले use करे जाएं and they are describing that noun. Okay. So you can see here I have written one sentence over here. I have my book. I have my book. मेरे पास मेरी book है. So in this you can see this book is your noun. Book क्या है आपका? Noun है. ठीक है? It is the name of a thing. And before book one word is used, that is used my and it is showing the possession. वो क्या show कर रहा है? वो book तो है but it is my book, पर वो मेरी book है. So this will be your possessive exactive. Okay. Suppose and if you have to write in possessive pronouns, तो possessive pronouns में I have mine. I have mine. So here the term mine, it is showing the possession that this is mine. This is mine. ये मेरी है. And always remember my dear children that if you are writing possessive pronouns, okay, so in this there will be no noun after that. इसमें माइन शब्द के बाद या possessive pronoun के बाद कोई भी noun नहीं आता है, because we have learned that pronouns are the words that are used in place of noun. Pronouns वो word होते हैं जो noun की जगह use करे जाए. So always remember possessive pronoun लिखने के बाद कोई भी noun नहीं आएगा. जैसे यहाँ पे देखा आपने my book है, my के बाद आप book लिखा है आपने, but here you can't write any noun over here. यहाँ पे कोई भी noun आप use नहीं कर पाएंगे. So this will be your last. Okay, possessive pronouns always comes at last. So now look at the second one. This is her doll. ये उसकी doll है. So here this doll is noun. ये doll क्या है आपका? Noun है. और noun से ठीक पहले आपका क्या use हुआ है? It has been used her. So here this her will be your possessive exactive because we are saying that this is her doll. ये उसकी doll है. ठीक है? So here this her will be your possessive exactive. Okay. Now look here. If we see the possessive pronoun, so what we have written? This doll is hers. ये उसकी doll है. So here we have not used any noun after this possessive pronoun. Possessive pronoun के बाद हमने कोई भी noun use नहीं किया है. हमने क्या लिखा है? This doll is hers. ये उसकी doll है. So hers will come at last. Okay. Now see the third one. He has his car. He has his car. उसके पास उसकी कार है. So car is noun. कार क्या है आपका? Noun है. और जो noun से ठीक पहले use word हुआ है and it is showing the possession also. ये possession show कर रहा है कि ये उसकी कार है. So this his will be your possessive exactive. Okay. Now looking towards here, he has his. He has his. So here this his is your possessive pronoun and it will come at last. Okay. Now see the last one. Is this your luggage? Is this your luggage? ये आपका luggage है. So here this luggage is noun. Luggage तो आपका noun है, पर luggage के पहले एक your use करा है कि क्या ये आपका luggage है. So here this your, जो your होगा, that will be your possessive pronoun exactive. Sorry, possessive
exactive. यहाँ पे your possessive exactive है and see here, is this yours? क्या ये आपका है? So here this yours will be your possessive pronoun. So my dear students, always remember that in possessive exactives, noun used to come at last and before noun whatever word that is showing position agar show kar raha hai, then that will be your possessive exactive. And always remember that in possessive pronouns always comes at last. After that no noun should come. Okay, I hope you have understood the difference between these two well. Dear students, now let's study our last exactive, that is your distributive exactives. So what are distributive exactives? Exactives that points out one person or thing separately. It means, my dear children, जब कभी भी कोई adjective कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को सेपरेटली अलग से हर एक को अलग से डिनोट करता है from a group or class. मतलब if suppose there are 56 students in your class and if I am referring to each one of the students in the class separately, हर किसी को अलग अलग individual मैं indicate कर रही हूँ, then that is known as your distributive exactive. If suppose, let me explain you this with the help of example. If suppose, my dear children, if I say that each one of you is coming in my birthday party, so what I am saying, each one of you, आप में से हर एक, मतलब I am saying to all the students individually, मैं हर एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ. I am not talking only about one student. मैं किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. I am saying that each one of you is coming in my birthday party. हर कोई मेरे birthday party में आ रहा है. So here each will be your distributive exactive, क्योंकि ये सबको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, नाउ इफ आई से दैट एवरीवन हैज टू टेक प्रिकॉशन, मीन्स इफ आई से एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग टू एनी वन पर्सन, मैं किसी एक बच्चे से बात नहीं कर रही हूँ, एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आई एम सेइंग टू एवरीवन, whoever is just watching this video, I am saying to all of you that everyone has to take precaution in this COVID period. सबको precaution लेने की जरूरत है, ठीक है. So here everyone is your distributive exactive. Okay, now let me take one more example. If I say no one will go out of the class, if I say no one of you will go out of the class, कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इट मीन्स आई एम सेइंग टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास. इसका मतलब मैं हर एक बच्चे से कह रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग टू एनी पर्टिकुलर चाइल्ड, मैं किसी एक बच्चे से या दो बच्चे से नहीं कह रही हूँ. आई एम सेइंग टू एवरीवन, नो वन, आई एम सेइंग नो वन विल गो आउट ऑफ द क्लास, कोई नहीं जाएगा. सो कोई में क्या है, हर कोई आता है. ओके, सो हियर नो वन विल बी योर डिस्ट्रीब्यूटिव exactive. Yes, students, now see here, every, either, each, any, neither, or, these all are your distributive exactives. Okay, suppose if I say that every student of class 5th is a topper, अगर मैं कहूँ हर एक बच्चा, every student, that means I am talking about each and every student of class 5. मैं हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ. सो हेयर दिस एवरी आई एम डिनोटिंग टू ऑल, हर एक को बोल रही हूँ. सो हेयर एवरी विल बी योर डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सेप्टिव. ओके, सपोज इफ आई टॉक अबाउट ईदर, सो इफ आई से जॉन मस्ट पेंट ईदर साइड ऑफ द शीट, जॉन को ईदर किसी में एक साइड में क्या कर लेना चाहिए, पेंट करना चाहिए, या फिर दिस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो ईदर साइड, कोई भी एक साइड में उसको पेंट कर लेना चाहिए. सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू अबाउट दीज टू पेजेस. ओके, सो हियर ईदर विल बी योर डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सेप्टिव. इफ आई से ईच, अगर मैं ईच की बात करूं, सो ईच बॉय वॉज गिवन अ बुक, हर एक लड़के को बुक दी गई थी. तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ओके, इफ आई टॉक अबाउट एनी, so
Can any one of you please switch off the fan? क्या आप में से कोई फैन को स्विच ऑफ कर देगा? सो टेल मी, हैव आई डिनोटेड टू एनी वन पर्सन? किसी एक पर्सन को बोला है? नहीं ना. इट मीन्स आई हैव सेड टू ईच एंड एवरीवन दैट एनी वन ऑफ यू कैन गो एंड स्विच ऑफ द फैन. So here this any will be your distributive exactive. If I say neither, about neither, so neither means neither answer was correct. कोई भी answer सही नहीं था. That means I am talking about all the answers. Okay. So here neither will be your distributive exactive. Or you want to eat apple or mangoes? Mangoes. So here or, that means I'm talking about apple or mango. So here or will be your distributive exactive. So my dear students, I hope you have understood it well and go through the video very nice. Dear students, now we are going to study a very important topic right now, that is your degree of comparison. So what is comparison? Whenever, dear children, we used to compare things with each other, that is known as comparison. And whenever there are different degrees, different forms of exactive which always used to change in every position, then that is known as your degree of comparison. So let's see what it is. The exactive change their form to show comparison. So dear students, you must have seen that in different places different exactives has been used. So that is known as your degrees of comparison. Okay. Now let me tell you with an example. Suppose, my dear students, if I say Rohit is a smart boy. Rohit is an smart boy. Okay. Here what I have said, that Rohit, the boy Rohit, which is in your class, he is very smart boy. बहुत smart लड़का है. So here this smart is exactive. ये क्या है आपका? Exactive है. And this is the base form. ये क्या है आपका? Base form है. ठीक है? Smart. I have said Rohit is a smart boy. Now look here. If I say Rohit is smarter. Rohit is smarter than Ram. Now in this sentence, what I am saying that Rohit is smarter than Ram. अब हमने रोहित को थोड़ा खुश कर दिया कि रोहित राम से क्या है? स्मार्ट है. सो रोहित बिकम हैप्पी. चलो रोहित को और थोड़ा खुश करते हैं. इफ आई से दैट रोहित is the smartest. Rohit is the smartest boy in his class. So my dear students, if I say that अगर अब हमने और रोहित को खुश कर दिया, that I have said that Rohit is the smartest boy in the class. रोहित अपनी क्लास में सबसे smartest boy है. So can you find some difference between in these three sentences? आपको इन तीन sentences में कुछ अंतर नजर आ रहा है? देख, see here I have used the exactive smart. यहाँ पे मैंने smart use किया. So this is the exactive over here. Then in the second one, what we have done, we have added, in addition to the smart के आगे हमने er और add कर दिया, and in addition to it we have added then. हमने उसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया? then भी यूज कर दिया. So here er and then is added when we have compared Rohit with one more another boy in the class. जब हमने एक और बॉय के साथ रोहित के साथ कंपेयर करा तो हमने क्या किया? स्मार्टर कर दिया, स्मार्टर देन कर दिया उसको. ठीक है. नाउ इन दिस यू कैन सी दैट द स्मार्ट रोहित इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. रोहित अपनी क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट बॉय है. सो हियर वी हैव एडेड est to the last one when we have added. So
whenever, dear children, whenever we are comparing with one more another, then it will be a comparative degree. जब कभी भी हम सिर्फ दो लोगों से कंपेयर करते हैं, एक तो वो खुद और एक और, सो दो पर्सन होते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए रोहित फर्स्ट में क्या था, बिल्कुल अकेला था, तो हमने सिंपल बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, सो ये हमारी क्या हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई, ठीक है, क्या डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब इस सेकेंड सेंटेंस में क्या किया हमने, रोहित इज स्मार्टर देन राम, रोहित राम से स्मार्ट है, तो हमने एक और के साथ कंपेयर करना ना, सो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, कंपेरेटिव डिग्री होगी। जब हम दो के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री होती है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग टू अमंग्स ऑल द ग्रुप, मतलब जितना भी हमें जिसके साथ भी कंपेयर करना है, अगर हम सबके साथ कंपेयर करें, then that is known as your superlative degree. Okay, जैसे हम आपके पास मान लीजिए एक पेंसिल है, ठीक है, यू आर हैविंग वन पेंसिल, तो हम इस पेंसिल को बोलेंगे दिस पेंसिल इज लॉन्ग, ठीक है। अगर हमारे सामने एक और पेंसिल आ जाए तो व्हाट वी विल से, दिस पेंसिल इज लॉन्गर देन दिस वन, ये पेंसिल लंबी है इससे, ठीक है। And if suppose we are having very big pencil, तो what we will say? We will say this pencil is longest among all. ये पेंसिल सबसे ज्यादा लंबी है। So dear students, जब कभी भी हम सिंपल एक्सैक्टिव की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। Whenever we are comparing with one more, जब हम एक और के साथ कंपेयर करें तो ये आपका कंपेरेटिव डिग्री होगा। और जब हम पूरे सब के, इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन, जब हम सब के साथ कंपेयर करें, जिसके साथ भी हमें करना है, दैट इज नोन एज योर सुपरलेटिव डिग्री। सपोज इफ आई से दैट वी यूज पॉजिटिव डिग्री, द बेस फॉर्म ऑफ द एक्सैक्टिव, टू कंपेयर टू इक्वल नाउन्स। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू इक्वल नाउन, जब हम दो सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला I am as tall as my brother, मैं अपने ब्रदर के बराबर ही लंबी हूं, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक सेम बेस को लेके टॉल, हम दोनों बराबर लंबे हैं, ठीक है, कोई ना ज्यादा बड़ा है ना कोई छोटा है, सो वी आर सेम, सो I am as tall as my brother. If I say Ruchi is as honest as शालिनी, रुचि बिल्कुल शालिनी की जैसे क्या है, ऑनेस्ट है, मतलब हम दोनों, शालिनी और रुचि दोनों क्या है, बोथ इक्वल क्वालिटी क्या है, दोनों सेम ऑनेस्ट है, मतलब जितनी ऑनेस्ट रुचि है उतनी ही ऑनेस्ट कौन है, शालिनी भी है। सो दिस इज योर पॉजिटिव फॉर्म। एंड सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई से अबाउट द कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री की बात करूं तो हियर वी यूज द कंपेरेटिव डिग्री ए हायर फॉर्म देन द बेस टू कंपेयर टू अनइक्वल नाउन्स। जब हम दो अनइक्वल नाउन्स के बारे में बात करें तो वो आपका होता है कंपेरेटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा कि रचित इज स्ट्रॉन्गर देन यश, रचित जो है यश से क्या है, स्ट्रॉन्गर है, बहादुर है, तो दोनों अलग अलग है, वो कम बहादुर है, वो ज्यादा है, तो ये अनइक्वल नाउन्स हैं। सो इट इज कंपेरेटिव, वी आर डूइंग द कंपैरिजन, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई से पंकज इज शॉर्टर देन हिज सिस्टर, पंकज अपनी बहन से क्या है, शॉर्टर है, छोटा है, तो दोनों क्या है, अलग है, एक लंबा एक छोटा है। सो वी आर कंपेयरिंग, व्हेन वी आर कंपेयरिंग विथ टू पर्सन, वन मोर अनदर पर्सन, और वी कैन से अनइक्वल नाउन, दैट इज नोन एज योर कंपेरेटिव डिग्री। My dear students, superlative degree. Superlative degree is the highest degree of quality. So whenever we are talking about more than two person or things, then it comes under the superlative degree. That means whenever we are talking about more than two person or things, जब हम दो से ज़्यादा के बारे में बात करें, then that comes under superlative degree. Suppose if I show you this senator, okay, so you can say it is big in size. ये क्या है, size में क्या है, big है। अगर if I compare with one more another sellotape, so if you see this sellotape, so what we will say that this sellotape is bigger than this one. ये वाला जो sellotape है ये इससे क्या है, बड़ा है। We have compared both the sellotape, हमने दोनों sellotape को क्या किया, compare करा। And suppose my dear students, if I show you, अगर मैं आपको दिखाऊं
if I show you this sellotape, now what you will say? अब क्या कहोगे? You will say that this sellotape is biggest among all these things. That means इसका मतलब ये नहीं कि ये सेलोटेप दुनिया में सबसे बड़ा सेलोटेप है. इट मीन्स कि हमारे ये जो 3 सेलोटेप है, इन 3 सेलोटेप में ये सबसे बड़ा है. ओके, इट डजंट मीन्स दैट यही दुनिया में सबसे बड़ा सेलोटेप है. इससे भी बड़े बड़े सेलोटेप्स आते हैं, बट वी आर कंपेयरिंग विद दीज 3. हम इन 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो वी आर सेइंग दैट दिस इज द बिगेस्ट सेलोटेप amongst all. So few more examples I want to tell you. Suppose my dear children, if I say kind, अगर हम एक और के साथ कंपेयर करेंगे तो kinder, और लास्ट में बहुत सारों के साथ करेंगे kindest, clever, cleverer, cleverest. So like this we will do one exercise so that you can understand this positive, comparative and superlative degree well. Students, so to understand the various degree of comparison, let's do this exercise. This is exercise 7.2 in which I have written the different degrees of exactives. So you have to fill up the rest degree of exactive. Okay. So in the first one, you can see that I have written beautiful. Suppose I am having one flower. So what I will say? This flower is beautiful. Okay. Suppose if I am having one more flower in my hand, एक और flower है मेरे हाथ में, so वो उससे ज़्यादा सुंदर है. So what I will say? This flower is more beautiful than this one. So what I will say? Beautiful, more beautiful. Okay, more beautiful. Okay, and suppose there are many flowers, बहुत सारे flowers हैं. So what I will say? This is the most beautiful flower. ये सबसे सुंदर flower है इन सब में से. So what we will say? I will say this is the most beautiful flower. Beautiful. Okay. See, beautiful, more beautiful, most beautiful. Okay. Now in this you can see that in comparative degree thinner is given. Thinner, it means I am comparing with one more. मैंने एक के साथ और compare करा है तो thinner आया है. तो इसका base form क्या होगा? इसका positive form क्या होगा dear students? वो होगा thin. यहाँ thinner है तो यहाँ पे क्या होगा? Thin. T-H-I-N. Thin. Thin, thinner, और सबसे जब सबसे पतला होगा तो what I will say? Thinnest. What I will say? Thinnest मतलब सबसे पतला. Thin मतलब पतला, thinner मतलब थोड़ा उससे और पतला, और thinnest means सबसे ज्यादा पतला. Okay. Now here you can see in the superlative degree biggest is given, मतलब सबसे बड़ा है. तो इसका मतलब इसका base form क्या होगा? Base form क्या होगा? Big होगा. क्या होगा? थर्ड वाला क्या होगा आपका? Big. Big और big अगर हम एक के साथ comparison करें, when we are comparing with one more, so it will become bigger, big, bigger and biggest. सबसे बड़ा. ठीक है, बड़ा उससे थोड़ा और बड़ा कंपेयर करा जब हमने दो के साथ, और बिगेस्ट में सबसे बड़ा. ओके. गुड, यहाँ पे बेटा गुड का क्या होगा? गुड, बेटर. गुड के बाद थोड़ा, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, और सबसे अच्छा. गुड, बेटर, बेस्ट. ओके. Now here you can see in the comparative degree it is given richer. Richer का base form क्या होगा? Base form will be rich. Rich मतलब अमीर, richer मतलब किसी के साथ compare करा उससे और richer. राम is richer than श्याम. राम जो है श्याम से क्या है? रिच है, रिचर है, मतलब उससे ज्यादा अमीर है. और जब सबसे अमीर होगा तो हम क्या बोलेंगे? रिच, रिचर, richest. R-I-C-H-E-S-T. Okay, my dear student. So these all are the degree of comparison. We can say different degrees of exactives which you use in forming the sentences. So my dear students, I hope you must have understood this chapter well. And if there will be any queries, we will discuss in the Google Meet. Okay. I hope you have understood everything well. And this much for today. Thank you very much. Stay connected. Keep learning. Thank you. Thank you very much.